Alright, we had kept just one small portion pending in alternate investment. That was just half a page, maybe just a page commodity valuation. I had told you that once I'm done with the derivatives, only then I will be able to touch that part. So let's just do the commodity valuation part. So when you're looking at commodities as an alternate investment class, understand, when we are looking at commodities as an alternate investment class, you're looking at different kinds of commodities. Could be gold, silver, platinum, that is your precious metals, copper, zinc, lead, that could be your base metals. You could be looking at agricultural commodities, livestock. But now it is very difficult to make investments in commodities for a long-term basis. Now gold is still easy because we have ETFs on gold, we have exchange traded securities on gold. So you can buy gold in terms of securities. So there is no hassle of keeping gold in your house because, you know, insurance, theft, there are a lot of issues with respect to maintaining a commodity. But with respect to other commodities, it is not so feasible, it is not so easy. Because if, say for example, I want to take position in agricultural commodities, I cannot keep lead or zinc or anything at my home. I cannot take long positions on base metals like that. So it is extremely difficult to make investments in commodities which is long term in nature. And the storage cost, the transportation is a very big deal because in financial assets it's very easy. You have the money in the bank account, you have the shares in the demat account, you don't have to worry about storage or anything. But the transaction cost, the transportation cost, the storage cost, etc. becomes a major hassle when we are looking at investing in commodities. So what is the avenue that we have? That is your forwards, futures on your or options on your commodities. So I can take futures and forward positions on the commodity without holding the commodity. I can take position in the commodities. So that is what we are talking about over here. So when you're looking at commodity valuation, we are actually going to be looking at the forward price or the future price. So that is why I was not able to get to the commodity valuation part before completing derivatives. So if you look at the formula, we've already done that. Futures price is equal to spot plus interest plus storage minus convenience. If you see the formula given in the book, futures is equal to spot plus interest plus storage minus convenience. And I had told you the benefit of holding a commodity is its convenience yield. We'll discuss in more details in level 2. But the convenience of holding a commodity today is the convenience yield. The benefit of having an equity share today is dividend. The benefit of fixed income security is coupons, interest. The benefit of having a commodity is calculated as convenience yield. This is your interest. This is your cost of carry. You can write it in the book. You can just circle this part and write cost of carry. And this is known as net cost of carry. Net of the benefits, net of convenience yield. This is cost of carry and this is net cost of carry, net of the benefits, net of the convenience yield. Comfortable? Everybody? Convenience yield is the benefit of having the commodity with yourself. Now I'll give you, I think I had discussed this when I was doing derivative. Now let's say a jeweler has the option. You get gold over here and you pay, let's say 25 over here, or you get gold over here and you still pay 25 over here. Which option would you prefer? Getting gold over here and then paying 25, or getting gold over here and then paying 25, assuming that the storage cost and everything is incorporated? The second one, sorry, the first one, storage cost and all have been included in 25. So if I get gold over here, the storage cost and all is already included in 25. Or even if I get gold over here, I have to still make a payment of the same amount of money, that is 25. I'll obviously prefer this. Because what if there is a customer in this meanwhile, in this time period, and I might end up selling this extra gold and I might end up making some kind of profit, some revenue. There is always a convenience of holding the asset. If I have to pay the same amount of money at the same time and all the cost of holding and everything taken care of, then obviously I would want to hold the commodity today. There is a benefit, there is a convenience of holding the commodity. That is convenience yield, the benefit of holding the commodity. So cost of carry is the cost of carrying the asset. Buy an asset over here, carry it until here, that is the cost of carry. Subtracting the benefits, that is the net cost of carry. Excluding the benefits, excluding the convenience, this is a net cost of carry.
This is fine. Now, forward price can be greater than spot price, forward price can be less than spot price. That will depend on whether your cost of carry is greater than benefits or it is less than benefits. That is whether your net cost of carry is positive or your net cost of carry is negative. If your cost of carry, if interest plus cost of carry, interest plus storage is more than convenience, forward more than spot. If interest plus storage is less than convenience, in that case forward will be less than spot. If you are adding more amount of money to spot than minusing it, than subtracting it, then spot plus something, futures is bigger. If it is spot minus something, futures is smaller. So if your cost of carry is more than benefit, your futures is bigger than spot price. If your cost of carry is less than benefit, your futures is less than spot price. If your cost of carry is more than benefit, your net cost of carry is positive. If your cost of carry is less than convenience, in that case net cost of carry is negative. This is known as Contango and this is known as backwardation. These are two situations. F greater than S is known as Contango, F less than S is known as backwardation. If you want to make it over there, please do. Make this in the book if you want to. Tell me if this is okay. These are the terms that you need to know. We'll discuss in more detail in level 2. This is Contango, this is backwardation. F greater than S, Contango, F less than S, backwardation. Tell me, comfortable till here? Everyone? Sure? They are just F greater than S is Contango. NCC will be positive, then forward is more than spot, na? Spot plus something will give you, yes, net cost of carry is positive, whatever it is. NCC is positive, it is Contango. NCC is negative, backwardation. Net cost of carry is positive, forward is greater than spot. You're adding something to the spot, that will give you a higher futures price, a higher forward price. Comfortable? Just 3 more terms to discuss: roll yield, collateral yield and change in spot price. Guys. Is there? Roll yield, collateral yield and spot change in spot prices. So basically when you're talking about roll yield, understand you would want to take positions using forwards or futures. Futures, because futures are more liquid. So therefore if I want to take positions, I would want to take positions using futures. Abhi futures mein kya hoga? When I'm taking position in futures, long-term futures are more expensive and they are less liquid, transaction cost ज़्यादा, and it's very difficult to find long-term futures. बहुत ज़्यादा long-term का futures नहीं होगा. I want to take a long-term futures contract for 5 years, I will not have it in the market. There is no 5-year futures in the market. But I want to invest for 5 years के लिए. Suppose I want to get a 5-year position in commodity. What I'm going to do is time 0 पे I will do an F plus. यहाँ पे आते आते ये F को सेल करके नया F plus, old F minus and new F plus. F को कैश सेटल कर लिया, पुराना फ्यूचर्स को हटा करके नया फ्यूचर्स कर दिया. यहाँ पर वापस पुराना F plus को old F minus and new F plus. ठीक है? What you are doing over here is you are rolling your forwards, you are rolling your futures. I wanted to do a 5-year contract. I don't have a scope for 5-year contract. 1 month किया, 1 month खत्म होने वाला है, पुराना बेच करके नया किया, फिर वो पुराना बेच करके नया किया. I keep on rolling over my futures contract. Comfortable? I keep on rolling over my futures contract. That is what I'm trying to do over here. Follow getting it?
अब ये रोल करने के चक्कर में अपना जो प्रॉफिट लॉस आएगा दैट इज योर रोल यील्ड. सो व्हेन यू आर रोलिंग ओवर योर फ्यूचर्स ट्रांजैक्शंस, whatever profit loss you're making over here, that is your roll yield. Roll yield can be positive or negative. It is positive in case of backwardation. It is negative in case of Contango. You'll have to learn this. This is important. You'll have to learn this. Roll yield is positive for backwardation, negative for Contango. Let's see how. Roll yield is positive for backwardation, negative for Contango. Now how is that working? How is that working? Basically what happens is, backwardation मतलब क्या? F less than S. Contango मतलब क्या? F is greater than S. पहले backwardation देखते हैं. If F is less than S, यहाँ का futures price यहाँ के spot से कम है ना? यहाँ का S0 से futures price कम है. ठीक है. दिस फ्यूचर्स प्राइस इज काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन ऑफ दिस एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस. स्पॉट प्लस इंटरेस्ट प्लस स्टोरेज माइनस बेनिफिट्स इज फ्यूचर्स. ये आज का फ्यूचर्स, ये आज का स्पॉट. फ्यूचर्स एग्जीक्यूट होगा यहां पर. दिस फ्यूचर्स इज एन एक्सपेक्टेशन फॉर ये वाला प्राइस. करेक्ट. दिस फ्यूचर्स इज फॉर्मिंग एन एक्सपेक्टेशन फॉर ये वाला स्पॉट प्राइस. सो स्पॉट से फ्यूचर्स कम थी, मतलब ये स्पॉट से ये स्पॉट्स, ये जो फ्यूचर्स है ये यहां आएगा. इससे ये वाला फ्यूचर्स कम थी, ये फ्यूचर्स के हिसाब से यहां स्पॉट आएगा. इस स्पॉट से ये वाला फ्यूचर्स कम थी, बिकॉज फ्यूचर्स इज लेस देन स्पॉट. बैकवर्डेशन. फ्यूचर्स लेस देन स्पॉट. ये फ्यूचर्स के जैसा ये वाला स्पॉट, ये वाला फ्यूचर्स इससे कम थी. अभी ना व्हाट इज हैपनिंग इज, ओल्डर एफ माइनस जो कर रहे हो, यू आर डूइंग ओल्डर. पुराना जो एफ है वो महंगा था, इससे ये वाला एफ सस्ता ना, इससे ये वाला एफ है सस्ता. सो बेसिकली आप पुराना महंगा एफ बेच करके नया सस्ता एफ प्लस कर रहे हो. आप पुराना सस्ता एफ बेच करके नया महंगा एफ, पुराना महंगा एफ बेच करके उससे सस्ता वाला जो एफ है वो प्लस कर रहे हो. सो यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन बैकवर्डेशन? यू सेल ओल्ड एक्सपेंसिव फॉरवर्ड एंड यू बाय न्यू चीपर फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स. महंगा सेल, सस्ता बाय, पॉजिटिव रोल यील्ड. थिंक. यहां का जो स्पॉट है उससे आज का फ्यूचर्स कम थी बिकॉज बैकवर्डेशन. ये फ्यूचर्स इज काइंड ऑफ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ यहां का स्पॉट प्राइस. यहां का स्पॉट प्राइस से यहां का फ्यूचर सस्ता. रोल ओवर कैसे करोगे? ये फ्यूचर्स को बेच करके नया फ्यूचर्स खरीद के. जो फ्यूचर्स बेच रहे हो वो महंगा है क्योंकि यहां का स्पॉट, यहां का फ्यूचर्स एक जैसा, और यहां का स्पॉट से कमती फ्यूचर्स वाला बाई कर रहे हो. बाइंग अ चीपर फॉरवर्ड एंड सेलिंग एन ओल्डर एक्सपेंसिव फॉरवर्ड, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन बैकवर्डेशन. एंड जस्ट द वाइस वर्सा. कॉन्टैंगो में क्या होगा? ये फ्यूचर्स इससे बड़ा, ये फ्यूचर्स के जैसा यहां का एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस, तो ये फ्यूचर्स का पे ऑफ तो ये वाले स्पॉट के हिसाब से होगा ना, और फिर यहां का जो फ्यूचर्स है वो इससे बड़ा. सो सस्ता पुराना, यू आर सेलिंग ओल्ड cheaper F and you're buying new expensive F. You're selling old cheaper F. ये वाला फ्यूचर्स को बेच करके नया जो फ्यूचर्स खरीद रहे हो वो फ्यूचर्स इससे बड़ा आ रहा है. सो महंगा वाला फ्यूचर्स बाय कर रहे हो, सस्ता वाला फ्यूचर्स पुराना सेल कर रहे हो. सो देयरफॉर सेल ओल्ड चीपर. चीपर वाला को बेच के महंगा वाला खरीदना इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव यील्ड. टेक दिस डाउन, टेक दिस पार्ट डाउन. एंड यू हैव टू एग्जाम में ना ये वाला पूरा चीज रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे बिकॉज कमोडिटीज वी आर गोइंग टू डू अ फुल फ्लेजेड रीडिंग ऑन कमोडिटीज लेटर. सो दैट इज वाई यू हैव टू लर्न दिस. रोल यील्ड बैकवर्डेशन उल्टा है, बैकवर्ड के लिए पॉजिटिव है, ऊपर वाला कॉन्टैंगो के लिए नेगेटिव है. वैसे याद करने का, रोल यील्ड याद करके रखना पड़ेगा. रोल यील्ड you'll have to remember. Please learn it. Because I know it's confusing. You're just getting used to with derivatives and alta and all. We will discuss a lot of commodity in level 2. So learn this part. Roll yield positive for backwardation, negative for contango.
टेल मी ओके टिल यहाँ तक. नेक्स्ट दोनों बहुत ईजी है. कोलैटरल यील्ड इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ आई वॉन्ट टू टेक अ 1 लाख का पोजिशन इन कमोडिटी, बट फ्यूचर्स के लिए मेरे को मार्जिन में खाली सपोज 10,000 रखना पड़ा. आई एम ट्राइंग टू डिजाइन माई पोर्टफोलियो. I want to invest इतना in equity, इतना in real estate, इतना in this, इतना in that. I'm trying to design my portfolio. I want to invest 1 lakh in commodity. I want to invest 1 lakh in commodity. Commodity में 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को मार्जिन में तो खाली 10,000 डालना है, क्योंकि फिजिकल कमोडिटी खरीदना तो बेकार काम. स्टोरेज, ट्रांजैक्शन वी डिस्कस्ड. सो अल्टीमेटली कमोडिटी में पोजीशंस कैसे लोगे? फ्यूचर्स के थ्रू. अभी 10,000 ही खाली लगा रहे हो और 1 लाख का एक्सपोजर मिल रहा है मेरे को. आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट वांट दैट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं 1 लाख का ट्रेजरी बिल में डाल दिया या बॉन्ड खरीद लिया. सो 1 लाख का एफ प्लस मतलब क्या? आई हैव द राइट टू डू और आई हैव द कॉन्ट्रैक्ट टू बाई 1 लाख का कमोडिटी. इफ आई एम डूइंग $1 लाख का एफ प्लस, दैट मीन्स आई हैव टू डन अ कॉन्ट्रैक्ट. आई हैव एन ऑब्लिगेशन राइट टू बाई 1 लाख का कमोडिटी. तो 1 लाख का बॉन्ड खरीद के बैठ जाओ. सो बॉन्ड जब भी कमोडिटी को रियलाइज करना होगा, यू हैव दैट 1 लाख का बॉन्ड. 1 लाख का बॉन्ड दो, कमोडिटी लो. सो बेसिकली यू हैव अ फ्यूचर्स पोजीशन ऑफ 1 लाख एफ प्लस, आई एम अज्यूमिंग ऑफ कोर्स. सो हैव द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 1 लाख का कमोडिटी. 1 लाख का बॉन्ड खरीद लोगे तो कोलैटरलाइज हो गया ना आपका पोजीशन, कि 1 लाख का एफ प्लस करके रखे हो, वो तो हवा में कर दिया, बेटिंग है. बट 1 लाख का अगर अमाउंट भी डिपॉजिट करके बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड एंड ऑल अगर करके रखे, सो आई एम कोलैटरलाइजिंग माई पोजिशन, राइट. एंड वो बॉन्ड जो है उसका इंटरेस्ट आएगा तो यील्ड आएगा तो. सो व्हेन यू कोलैटरलाइज योर फ्यूचर्स पोजिशन, द यील्ड दैट यू गेट ऑन कोलैटरल यील्ड, दैट इज योर सेकंड टर्म. द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द कोलैटरल टू एंटर इनटू अ फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन. सो व्हेन यू डोंट वांट योर फ्यूचर्स टू हैव जस्ट अ बेटिंग काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, नहीं मेरे को तो इतना पैसा कमोडिटी में लगाने का था, इन दैट केस वी कैन कोलैटरलाइज आवर फ्यूचर्स पोजिशन. एंड दैट कोलैटरल पे जो यील्ड मिलेगा, दैट इज योर कोलैटरल यील्ड. बोलो, कंफर्टेबल, इजी, दैट इज योर कोलैटरल यील्ड. एंड चेंजेस इन स्पॉट प्राइसेस, ऑब्वियस सा बात है, आज स्पॉट कुछ है, फॉरवर्ड कुछ है. अब मेजर कुछ चेंजेस अगर स्पॉट में यहां होगा तो फ्यूचर्स में भी फायदा नुकसान होगा, वो तो पे ऑफ पता ही है हम लोग को. सो द स्पॉट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज विल चेंज, ऑफ कोर्स योर पे ऑफ्स आर गोइंग टू चेंज, योर फ्यूचर्स में फायदा नुकसान आएगा. सो कैसे स्पॉट प्राइस में चेंज हो रहा है, कैसे फ्यूचर्स में चेंज हो रहा है, दैट इज योर चेंजेस इन स्पॉट प्राइस. उसमें और ज्यादा वो बेसिस वगैरह डिस्कस किया, विल नॉट गेट इनटू दैट. दे हैव रिटन अ टर्म कन्वर्जेंस ऑफ फ्यूचर्स टू स्पॉट एंड ऑल. डोंट बॉदर अबाउट इट, जस्ट अंडरस्टैंड चेंजेस इन स्पॉट प्राइस. ये स्पॉट का चेंजेस होगा तो उसके हिसाब से फ्यूचर्स में भी फायदा नुकसान होगा. दैट इज चेंजेस इन स्पॉट. सो रोल यील्ड, कोलैटरल यील्ड एंड चेंजेस इन स्पॉट प्राइस, ये 3 पार्ट से कमोडिटी के ऊपर में यील्ड आएगा अपना. रोल यील्ड, कोलैटरल यील्ड एंड चेंजेस इन स्पॉट प्राइस. इफ द स्पॉट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज विल चेंज, ऑफ कोर्स फ्यूचर से फायदा नुकसान होगा. प्राइस बढ़ने से जनरली वी विल बी गेनिंग, प्राइस गिरने से नुकसान. रोल यील्ड की रोल करते, रोल क्यों करते समझ में आया? बिकॉज वी डोंट हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल, बट वी वांटेड टू डू लॉन्ग टर्म, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म करके उसको रोल ओवर करते हैं. पुराना बेच के नया खरीदते जाओ. यू कीप ऑन रोलिंग ओवर योर कॉन्ट्रैक्ट. सो रोल यील्ड का रिटर्न, बैकवर्डेशन पॉजिटिव, कॉन्टैंगो नेगेटिव. कोलैटरल जो रखे हो, कोलैटरल के ऊपर का रिटर्न, कोलैटरल यील्ड. एंड स्पॉट प्राइस का चेंजेस से जो रिटर्न होगा, स्पॉट प्राइस का चेंजेस से. कंफर्टेबल, कंप्लीट्स योर कमोडिटी.